माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, please. Honorable members, 13th December will always be remembered. Please. Honorable members, 13th December will always be remembered as the grimmest day in the history of independent India. 21 years ago, on this day in 2001, terrorists attacked this scared temple of our democracy, but intrepid security personnel displayed death-defying courage and valor to defend and protect the parliament and foiled the audacious attempt of the terrorists to strike at the very soul of our nation. The attack took toll of 10 precious lives, 2 Parliament Security Service staff, 5 Delhi police personnel, a women's Central Reserve Police Force constable, a gardener of CPWD, and a camera person from ANI. Since then, on this day, we not only remember and express our deepest sympathies for lives lost and disrupted by this dastardly act, but also reiterate our unequivocal condemnation of terrorism in all its forms and manifestations. Honorable members, terrorism threatens all people everywhere and undermines peace, stability, and security. All acts of terrorism are criminal, inhuman, and unjustifiable. This has been rightly highlighted in the country's international stand on terrorism, calling for putting a stop to classify terrorists as bad or good. Though the country remains the 8th most highly impacted country from terrorism globally, according to Global Terrorism Index 2020, the adherence to the policy of zero tolerance has led to substantial decline in terrorist attacks. Honorable members, the spectre of terrorism still haunts the humanity. Over the years, terrorist threats have assumed a lethal character, making it difficult for the nations around the globe to tackle the menace. Radicalization of youth through the internet and social media, terror financing, and trafficking in drugs and arms are some of the formidable terror risks that nations face today. India is not immune from it. Honorable members, India has been a victim of terror for a long time. As members, you have a key role in strengthening the anti-terror legislative framework. As public representatives, you can articulate the issues and interests of vulnerable and sensitive groups of society that are prone to radicalization and engage them through confidence-building measures. Let us all resolve to fight collectively against all forms of terrorism and rededicate ourselves to protect the unity and integrity of our nation. I request honorable members to rise in their places and observe a moment silence as a mark of respect to the memory of those who laid their lives in that dastardly attack. Papers to be laid on the table. Please. Mani LOP. Sir, I have given notice under 267 Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. Sir, I hereby give notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of my intention to move the following motion
for the suspension of business listed for 13 December 2022. Our national security and a territorial integrity is being impinged upon by brazen Chinese transgressions as the government remains a mute spectator. The valor of our armed forces in Galwan Valley, Ladakh is well known, but China has brazenly transgressed into our territory since April 2020. The illegal and unprovoked Chinese transgressions upon Y Junction in Dipiang Plains continues till date. Similar is the state of Chinese transgressions into Gogra and Hot Springs area in eastern Ladakh. Not only this, Chinese built up next to Pangong Lake area, including building of PLAs, divisional headquarters, army garrisons, weapon shelters for artillery, anti-aircraft guns and armored carriers is being continuously ignored by our government. Thank you. Government also remains obvious to the Chinese construction of a new radom and two high Pangong bridge, also with decks on both sides, facilitating easy movement of Chinese troops has also been brushed aside. Despite demand to ensure status quo ante as April 2020, China has refused to धन्यवाद माननीय vacate. No, no, माननीय एक मिनट माननीय लोधी, सुनिए. आपकी No, no, नोटिस माननीय sir, चेयरमैन साहब को you सजेशन है, know, आपने पढ़ लिया. since back, You have finished it. Finish in 1 minute. You एक finished it. minute. Time could have been used for that. To vacate our territory and has been deliberately taking shelter beyond the statement of our Prime Minister dated 20th June 2020, saying that no one has entered into our territory. Even the ongoing The notice is with talks with the Chinese. The notice is with honorable or chairman. He will no, decide. this is the Please, notice. You have I am already reading. I am reading the Mani- content of You have notice. already- I am reading the You have already content of voted. notice You so have that already it should voted. go in the slot, You have already and I voted. want to reply according to that. माननीय लोधी, आपने पूरी Sir, नोटिस पढ़ ली है. No one has Please. entered into our Please, the territory. notice is under Even consideration the of honorable ongoing chairman. He talks. will decide. Please, माननीय Deputy Chairman, sir. please. My Deputy Chairman, sir. Please, The Honorable please, Defense please. Minister Shri Rajnath माननीय Singh लोधी, ji is slated you have to make a already statement explained. regarding the आपने Yangtze बता दिया incident. पूरा. It's under माननीय लोधी, आपने अपने नोटिस का कंटेंट आपने अपने नोटिस का कंटेंट Deputy बता Chairman, लिया. sir. प्लीज Honorable Deputy Chairman, sir. माननीय लोधी The Honorable- प्लीज माननीय प्लीज The Honorable Defense Minister. आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली. आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली. प्लीज माननीय एलओपी को बोलने का पूरा मैंने मौका दिया. उन्होंने अपनी नोटिस बताई. प्लीज अपने सीट्स ले. Honorable माननीय लीडर ऑफ Deputy द Chairman, हाउस sir. प्लीज The Honorable आपकी बात Defense ही रिकॉर्ड Minister में जा Shri रही है. Rajnath प्लीज Singh ji बोले. is slated to make a statement regarding the Yangtze incident in Tawang sector in Arunachal Pradesh on 9 December at 2 p.m. today. Looking at the gravity of the situation and the request made by the opposition also, I would urge the chair to allow the Honorable Defense Minister to make the statement at 12:30 p.m. instead of 2 p.m. so that the issue can be placed before the House even by in the middle of question hour. So kindly allow the Defense Minister to make the statement and he will give all the information that is sought for by the opposition. प्लीज एक मिनट नाजिर साहब आप बैठ जाए. प्लीज मैडम प्लीज बैठ जा. प्लीज एक मिनट माननीय प्रमोद जी. माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी बयान देंगे इस विषय पर.
माननीय एलओपी साहब ने अपनी नोटिस पढ़ी। आप 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच में माननीय रक्षा मंत्री का बयान सुने। ये संवेदनशील मामला है, देश के हित से जुड़ा, आप सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी को सुन ले आप। जो माननीय एलओपी साहब की चिंता है, माननीय एलओपी साहब की जो चिंता है, जो सवाल उठा, उस पर ही माननीय रक्षा मंत्री जी बोलने के लिए आ रहे हैं। 12:30 बजे उनके बयान सुनने का धैर्य कम से कम रखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। Deputy Chairman, sir, 12:30 बजे I बयान rise होगा। to lay on the table of the 12:30 House बजे बयान होगा। papers mentioned against my name as serial number 1 in today's revised list 12:30 of बजे business. 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री बयान देंगे, प्लीज। राव इंद्रजीत सिंह, पेपर स्लेट। श्री किशन पाल, श्री किशन पाल। आदरणीय सभापति महोदय, आपके अनुमति से आज की संसदीय कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों को समर्पित करता हूं। डॉक्टर भागवत कराज। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सामने और सीरियल नंबर 3 पर उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री भगवंत खुबा। संशोधित कार्य सूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का आग्रह करता हूं। डॉक्टर भागवत कराज। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। Honorable Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. श्री शांतनु ठाकुर। Respected Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, serial number 7 of today's revised list of business. Thank you, sir. डॉक्टर मुंजप्पा महेंद्र भाई। डॉक्टर मुंजप्पा महेंद्र भाई, प्लीज। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Reports of the department related parliamentary standing committee on commerce, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, प्लीज। प्रियंका जी रिपोर्ट लें, प्लीज। रिपोर्ट ले करें आप। आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। I rise to present the 173rd, 174th and 175th reports in English and Hindi of the department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce mentioned against my name in the list of business. Thank you. Thank you. Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, माननीय श्री ब्रिजलाल। Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 240th and 241st report English and Hindi of the department related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs as mentioned in today's list of business against my name. Thank you, sir. Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, Srimati S. Fongan Konyak. Honorable Deputy Chairman, sir, with your permission, I present to you the 328th, 329th, 330th, 331st and 302nd reports in English and Hindi of the department-related Parliamentary Standing Committee on Tourism, Transport and Culture as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Finance, GVL Narasimha Rao. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi
of the 52nd report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on the Competition Amendment Bill 2022 as mentioned in the list of business against my name. Thank you, sir. Mani Devi. And the point of order is, both my point of orders are on the same rule, which is 29. Right. Please check out 29, sir. Yes. About 7 minutes ago, that is at about 11:13, we received this. We received supplementary list of business, Rule 29, stating that the defense minister will make a statement at 2 p.m. This one, at 2 p.m. Now you tell us, it is 12:30. The supplementary business then is incorrect. So we need to first correct that. Number one. Just 1 minute. Number one. Number two, a statement may be made, but it is very clear the issue is of grave concern. We are all with the army and the soldiers, but please allow the opposition to be a part of this discussion. After the statement can come, we will listen. Yes, sir. The statement can come. No one wants to disrupt. The statement will come. We will listen to the defense minister, and then we wish to participate. Thank you, Derek ji. Regarding पहले पॉइंट के संदर्भ में आपको डेरेक जी, पहले पॉइंट के संदर्भ में मैंने अनुरोध किया कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जिस पर बयान देंगे, 2 बजे लिस्ट ऑफ बिजनेस में आया था, ये कलेक्ट आप कह रहे हैं, पर हाउस की सहमति है तो 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच देंगे, ये मैंने कहा। नंबर 1, नंबर 2, चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, माननीय यूरोपी ने उठाया, हम सबने सुना, नोटिस उनकी है 267 में, इसलिए मैंने कहा कि 2 से 12:30 में उसको हम लोग कर लें। दिस वाज नंबर 1। नंबर 2, क्या आप कुछ कहना चाहते थे? मैंने द रूल प्रोवाइड करता है कि विद द लीव ऑफ द चेयरमैन द बिजनेस ऑफ द डे कैन बी डिटरमिन्ड। तो हमने चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट की है और हाउस की सेंटिमेंट देखते हुए मैंने अनुरोध किया कि 12:30 बजे कर लें। प्रमोद जी, विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करना है कि देश की संप्रभुता से, सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। जब से ये सरकार आई है, चीन जब चाहे हमारे यहाँ टहलता हुआ चला आता है। सर, हमने स्टेटमेंट मांगे नहीं। विषय पर माननीय चिदम्बरम जी कुछ बोलना चाहते, प्लीज। I want to know through you, the leader of the House, after the statement by the Honorable Defence Minister at 12:30, will there be a discussion or not? माननीय आप सबने सुना, माननीय चिदम्बरम साहब ने, जो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और देश की राजनीति में उनकी एक अपनी अलग पहचान है और अनुभव भी है। इस संवेदनशील मुद्दे पर हाउस में किस रूप में डिस्कशन होता है, आप सब देश के लिए कंसर्न है, आप खुद जानते हैं, उसकी मर्यादा आप जानते हैं, और क्या परंपरा रही है सदन की आप ये भी जानते हैं। नहीं, तो माननीय रक्षा मंत्री आएंगे, बयान देंगे, उसके बाद आप इस मामले की संवेदनशीलता समझते हुए प्लीज, वी आर नॉट डिस्कसिंग नाउ दिस इशू। I gave you an opportunity. We are not discussing this issue now. Let the defense minister come. He will give his statement. He will place his statement. Please. Now 0 hour, Dr. Radha Mohan Das Agrawal. 0 hour. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं। देश की उच्च शिक्षा देश का भविष्य है। भारत सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता मानक, उसके पाठ्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की स्थापना की है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चयन हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने रेगुलेशंस में यह स्पष्ट रूप से बताता है कि देश के सारे विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति किन नियमों के तहत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहता है कि एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, जिस सर्च कमेटी में कोई भी नॉन एकेडमिक व्यक्ति नहीं होगा
यह सर्च कमेटी कम से कम 3 और संभव हो तो 3 से 5 लोगों के नाम का पैनल सिर्फ चांसलर को भेजेगी। जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। चांसलर को भेजेगी, चांसलर उस 3 और 5 के नाम के पैनल से किसी एक नाम का चयन करेगा। अगर सर्च कमेटी 3 से कम के नाम भेजती है तो ऐसा कोई भी चयन अगर होता है तो वो ऐड ए वीडियो होगा, अर्थात अपने चयन के दिन से ही वो नल एंड वाइड हो जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक राज्य के, मैं उस राज्य का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, एक राज्य के एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन को नल एंड वाइड घोषित किया। उसके बाद हाईकोर्ट ने उसी राज्य के एक दूसरे विश्वविद्यालय कुफोस, उनके चयन को, वाइस चांसलर के चयन को नल एंड वाइड घोषित किया गया। इसके बाद पता चला कि उस राज्य में 9 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके सर्च कमेटी में या तो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, या उस सर्च कमेटी ने 3 नाम से 5 नाम का पैनल भेजने की जगह पर सिर्फ एक नाम भेजने का काम किया। मैं फिर से राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन विश्वविद्यालयों का नाम लूंगा। केरल यूनिवर्सिटी, कोचिन यूनिवर्सिटी, कैलिकट यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, आदि शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, कैलिकट यूनिवर्सिटी, अर्थात उस राज्य में जितने भी बड़े विश्वविद्यालय थे सबका चयन गैर कानूनी तरीके से किया गया। मैं माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इस बात का निर्देश देंगे, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ हैं, वो इस बात का निर्देश देंगे कि ऐसी जितनी भी नियुक्तियां नियमों को तोड़ करके इन 9 विश्वविद्यालय में हुई है उसको नल एंड वाइड घोषित किया जाए, और साथ में देश में अन्य भी अगर कोई नियुक्तियां उस राज्य में हुई है तो उनको भी नल एंड वाइड घोषित किया जाए। श्री इरण कराड़ी, श्री इरण कराड़ी। धन्यवाद गौरवान्वित उपसभापति। आपके अपनी सीट पर जाए। ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ವೀರ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಕೆಳದಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಒನಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ಸಾಹಸಗೈದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೋರಾಡಿದ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾನ್ಯ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ದೇಶದ ಮೊದಲನೆಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಂ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆದ ಜನರಲ್ ಕೆ